Students, in the previous video lecture, we have studied about how to write the names of the compounds, how to write the formulas when names of the compound is given. I hope that is clear to you. In today's class, we are going to study how to find formula unit mass. How can you find formula unit mass? It is the same way as you were finding molecular mass. Same as that of finding मॉलिक्यूलर मास. जैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते थे वैसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास भी फाइंड करेंगे. दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस. सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन देम. राइट. बस फर्क क्या है कि मॉलिक्यूलर मास में हम किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं. फॉर्मूला यूनिट मास मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूलाज के लिए, केमिकल फॉर्मूलाज के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl, so NaCl is the formula for sodium chloride. That is a common salt. Now, what is the formula unit mass of this? Formula unit mass will be equal to 1 into atomic mass of sodium plus 1 into atomic mass of chlorine. ठीक है. सो इसका क्या होगा? 1 into atomic mass सोडियम का क्या है? 23U plus what is atomic mass of chlorine? 35.5U. right? Add करो. That is 23 plus 35.5U. So that is equal to 58.5U. It is formula unit mass हम mainly formulas के लिए करते हैं, particular formulas के लिए. Let us see one more example. ZNO, that is zinc oxide. So zinc's atomic mass 1 into atomic mass of zinc plus 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे पास एक ही एटॉमिक ऑक्सीजन है. तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 65U प्लस ऑक्सीजन का 16U. तो दैट इज 65 प्लस 16U. (81U). Right? So this way you will solve the formula unit mass. I hope it is clear. Next we are going to see is mole concept. Very important topic of the chapter, that is mole concept. Now before studying what is mole concept, students, you should know these two terms, that is gram atomic mass. आपको ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है पता होना चाहिए, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो पता होना चाहिए. So before studying the mole concept in detail, we should first study these two topics in details in today's lecture. Then we will go for mole concept. So मोल कॉन्सेप्ट से पहले हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? वी शुड अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो लेट अस सी द फर्स्ट वन, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास. So what is gram atomic mass? You can write down first. Simple definition लिख सकते हो. The amount of substance, the amount of a substance whose mass in grams is
numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of a substance, of that substance. डेफिनेशन से क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मास में ग्राम्स में ले रहे हैं वो इक्वल होता है न्यूमेरिकली टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, when you express the atomic mass of substance in grams, that is known as gram atomic mass. क्या बोलते हैं हम? Expressing atomic mass in grams. For example, atomic mass of oxygen कितना होता है? 16U. तो जब मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूंगी, when I express this atomic mass of oxygen in grams, that time it will be known as gram atomic mass. So gram atomic mass किस में होगा? ग्राम्स में होगा. So gram atomic mass of oxygen is equal to 16 grams. समझ में आया? Same way, if I am saying you the atomic mass of nitrogen is 14U. And what is the gram atomic mass? So when you express the atomic mass in grams, it is known as gram atomic mass. So gram atomic mass क्या हो जाएगा? That will be 14 grams. समझ में आया? Now, ग्राम एटॉमिक मास एक सब्सटेंस का रिप्रेजेंट करता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम. जो हमारा द ग्राम एटॉमिक मास of a substance represent the mass of 1 mole of atom. अब 1 मोल ऑफ एटम कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. ये हम मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि ये यूनिट कहां से आई? ऑफ दैट सब्सटेंस. सो अगर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितने होते हैं, तो 1 gram atomic mass of any substance is 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ठीक है, इसलिए 1U is equal to how much? 1 gram. 23U is equal to how much gram? 23. क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं. एंड ये चीज हम लोग डिटेल में मोल कॉन्सेप्ट में स्टडी करेंगे. That is 1 gram of atomic mass of any substance is equal to 1 mole of atoms. And 1 mole कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Now, before we go further, we should know one more term, that is molar mass. Molar mass. What is molar mass? Molar mass किसको बोलेंगे? The molar mass of a substance is the mass of 1 mole of that substance. 1 मोल में कितना सब्सटेंस मास में प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मोलर मास. The molar mass of a substance
is the mass of 1 mole of that substance. इन शॉर्ट उसको एक्सप्रेस करते हैं हम ग्राम पर मोल में. What is molar mass? Molar mass is the molar mass of the substance is the mass of 1 mole of that substance. So molar mass को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम्स पर मोल में. कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम्स पर मोल में. For example, if I'm saying you find the molar mass of a substance, तो molar mass of a substance like example है आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा. Calculate the molar masses of the following substances. For example, first ethyne. So now how to do this? Same way जैसे हम molecular mass find करते थे, बस अब unit क्या आ जाएगी? Unit आ जाएगी grams per mole. So that is 2 into how many atoms of carbon? 2. 2 into atomic mass of carbon plus how many hydrogens? 2. So 2 into atomic mass of hydrogen. So atomic mass of carbon is what? It is 12. Atomic mass of hydrogen is what? It is 1. 24 plus 2, that is 26. And molar mass find करने बोला है मतलब grams per mole. So what is molar mass, students? Listen carefully. जब आप the molar mass of substance is the mass of 1 mole of that substance, कि एक मोल में कितना मास प्रेजेंट है उस सब्सटेंस का, उसे हम बोलते हैं मोलर मास. मेथड इज सेम जैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, दैट इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस. बस यूनिट क्या है? यूनिट्स है ग्राम पर मोल. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. सल्फर मॉलिक्यूल. So I am saying you calculate the molar mass of sulfur molecule. Now sulfur molecules in the sense S8, right? So that is 8 into atomic mass of sulfur, or you can say mass of sulfur. So that is 8 into 32. So that is 256 gram per mole. So this way you have to calculate the molar mass. So you will try for P4, HCl and HNO3 as your homework. This you have to try. Okay. Now, next we are going to see is gram molecular mass. Gram molecular mass. ग्राम एटॉमिक मास किसके लिए था? एटम्स के लिए था. सो ग्राम मॉलिक्यूलर किसके लिए होगा? फॉर मॉलिक्यूल्स, राइट? सो यू कैन राइट डाउन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass is called gram atomic mass. For example, molecular mass of oxygen कितना है? अब मैंने बोला molecular mass of oxygen. अब oxygen molecule means O2, so that time it is 32U. So अगर मैं पूछ रही हूँ ग्राम molecular mass कितना है, तो ग्राम molecular mass will be equal to what, students? क्या डाल दोगे आप यूनिट? ग्राम molecular mass of oxygen will be, molecule of oxygen will be what? 32 grams. समझ में आया? तो जैसे ग्राम molecular ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट करता था मास ऑफ 1 मोल,
Same way, the gram molecular mass of a substance represents the mass of one molecule of atoms. So, gram molecular mass of a substance represents the mass of 1 mole of molecules. Of mass of 1 mole of molecules कितने equals होता है? That is 6.022 into 10 to the power 23 molecules of that substance. So I hope gram atomic mass and gram molecular masses is clear to you. And molar mass of the substance. That is same thing. Gram molecular mass is also of an element is the molar mass of an element. It's the same thing. Same way, gram molecular mass is nothing but the molar mass of that particular molecule. So I hope that is clear to you. Mole concept we are going to study in the next lecture. Thank you.